another one is the unbalanced force. Let's talk about what is balanced force. In simple words, if all the forces acting on the object, okay, if the sum of all the forces acting on the object is zero, then it would be called as balanced forces. Okay. Yes, As you sir. can see, if a box is resting on the floor, that means every force is acting on it. If you sum up them, that would become zero, right? So that's what the your balanced force is. So so if we basically find out that what type of forces, so you must have seen that tug of war. So if there is no movement in the rope, that means the forces acting on both the sides are equal in nature. So that's why it would be called as balanced force. Clear, Rithvika? Yes, sir. Next, we have the unbalanced force. So one more thing, balanced force can only produce the change in shape. They cannot produce the motion in the body because ultimately the net force is zero. Okay? Yes, sir. The net force is zero. So that's why it would be nothing but, okay. So I hope that's clear. Yes, sir. That's clear. And but the unbalanced forces means if resultant of all the forces are not equals to zero, that means such forces are called unbalanced forces. Clear, Rithvika? Yes, sir. Okay. And the unbalanced forces are responsible for the, you can say, the for the motion in the body, right? Yes, They're sir. responsible for the motion in the body, right? So if we talk about, so in the unbalanced forces, there is some net force left which produces the acceleration in the body, and hence it would be moving. Okay. Yes, Now sir. let's talk about the first law of motion. So first law of motion is one of the most simplest law of motion that we've studied, that we are known to. Right. So first thing is basically inertia. Let me tell you about inertia. So inertia is the property of a body which resists the change in state of the body. That means if I'm in motion, my body would allow, or would basically wants to be in the motion, right? If I'm trying to stop it, it would resist. If I'm in rest, if I would try to move in motion, to basically make some motion in my body, the body will not allow me to do that. That is called inertia. So inertia is the property of a body. Is that clear? Yes, sir. And inertia depends on the one thing, that is mass. So heavier bodies will have more inertia, lighter bodies will have less inertia, right? And next thing is basically inertia is okay. So inertia is the measure of basically mass is the measure of inertia of a body. That means higher the mass, higher will be the inertia of the body, right? Now let's talk about it. So instead of let's take the definition. So inertia of the body, like what is first law of motion? Basically, a body will remain at rest and the body will remain in uniform motion unless an external force will not act on it. So if external force will act on it, then it would change the state of rest or the motion, right? Yes, sir. Okay, that's what the inertia is. Okay, let's talk about some examples. So basically, hanging carpet, like if you have a hanging carpet and you are beating it with basically with a stick, the particles would come off and fall off from that. You can say that carpet, right? If you hit that carpet, the carpet would basically start to move, but the particle wants to be in motion. That's why they get detached from the your carpet. The particles would detach from the carpet and hence they would fall out. Is that clear, Rithvika? Yes, sir. Next is basically when you when suddenly a car has been started, you feel a backward jerk, right? That is also due to the law of inertia, right? Inertia property. And if you talk about the when this bus is basically suddenly stop, basically the you fall forward, right? आप आगे गिरते हो. The reason is again inertia, law of inertia. ठीक है, Ritvika? Yes, sir. Okay. So Newton's first law basically gives us a definition of force, right? So a force is a quantity which changes or tends to change the state of the rest or the uniform motion. यानी कि अगर रेस्ट में है तो यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो या तो इधर रेस्ट और would accelerate. ठीक है, Ritvika? And we know that force is a vector quantity. Please do let me know, is that clear? Yes, sir. Sure, that's good. Let's talk about momentum. So momentum is basically one of the most important topic. I know that momentum is not specifically mentioned, but in the second law of motion, momentum is a part of it. Okay, second law of motion is based on the momentum topic, Ritvika. Okay, so that's why we are doing it right now. Yes, sir.
Okay. So momentum, let's talk about what momentum is. In simple words, momentum is the product of mass and velocity. But in terms of general understanding, in terms of the context, momentum is basically, you can say that is a measure of quantity of motion. That means how much motion is there in a single body. That would be called as momentum. Clear, Rithvika? Yes, sir. And momentum is a vector quantity. So even though if a body is moving, the momentum could be zero. How? Because velocity can be zero. Na? So if the velocity can be zero, that means momentum can be zero as well. Okay? Yes, sir. That's great. Momentum is a vector quantity and the SI unit of momentum is kg meter per second. Kg is for mass, meter per second is for the velocity, right? Yes, sir. Please try this question. Sir, 150. 150. ठीक है. Correct. ठीक है. Second करो. Sir, 5. Correct. ठीक है. Very good. ये प्लीज कैलकुलेट करो सो दैट आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन से वो हो जाए, बैठ जाए हाथ. Oh, yes, sir.
10,000 and the B bit is 8. 8,000 and is 8. Correct. Correct. Very good. Okay, so this is all about the momentum. Now let's talk about the second law of motion. Okay, so second law of motion. So let's talk about second law of motion. Second law of motion says that the rate of change of momentum, rate means you are dividing the change of momentum by time. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. That means Rithvika, एक body है, right? कोई speed से चल रही है already, right? So if you push some of that body, that means you're applying force, yes or no? Yes, sir. So force लग रही है Rithvika, so that means acceleration आएगा या नहीं आएगा? Sir? If you're applying force, will there be any acceleration or not? Yes, sir. There would be acceleration, right? So acceleration आया तो velocity तो change होगी ना Rithvika? Yes, sir. Velocity change, then momentum change. Yes, sir. That means जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी उतनी ही चेंज होगी, जितनी ज्यादा फोर्स उतना एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज, दैट मींस उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज. सो मोमेंटम चेंज अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पर. जितना ज्यादा आप मोमेंट फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतने कम टाइम में, बिकॉज ज्यादा फोर्स लगाई एकदम से, सो मोमेंटम एकदम से इंक्रीज हुआ और टाइम कितना लगा? बहुत छोटा सा टाइम. गॉट इट? So second law of motion says that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and it will take place in the same direction of force acting on it. Got it? Yes, sir. Okay. So that's how the force equals to mass into acceleration is basically derived, but आपका derivation portion नहीं है, जैसे ये याद रखो force equals to mass into acceleration होता है. Second law of motion relationship देता है force and acceleration में, because force and acceleration are two quantities which can be changed. Mass तो हमारा fix ही रहता है एक body का, right? Yes, sir. अब बात करते हैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. इक्वल्स टू एफ बाई एम. तो यहाँ देखो ऋत्विका, फोर्स जो आपका एक्सेलरेशन वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे. जितना ज्यादा हैवी बॉडी होगी उतना कम एक्सेलरेशन होगा. आपने देखा होगा ना, जो ट्रक होता है, एक बस होती है, उसको स्पीड अटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू बाइक और कार, Yes, sir. राइट? सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सेलरेशन होगी, राइट? Yes, sir. Great. So acceleration produced in the body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body, right? So अब यहाँ देखो एक, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ देखते हैं. सेकंड लॉ, आपने देखा होगा क्रिकेट में जब भी कोई बॉल कैच करता है, राइट, कोई भी कीपर हुआ, फील्डर हुआ, तो वो अपने हाथ को जो है बैकवर्ड ऐसे लेके जाते हैं. द रीजन इज ऋत्विका, अब अगर हाथ में आपने बॉल ऐसे ही कैच कर ली, वहीं पे रखा हाथ को, तो पहले कुछ मोमेंटम होगा बॉल का और सडनली आपके हाथ में आते ही मोमेंटम हो गया जीरो. तो टाइम कितना लगा? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा आपके हाथ के बाद, तो उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है ना, Yes, sir. राइट? तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगी उस टाइम पे या नहीं? Yes, sir. राइट. बट अगर आप हैंड को पीछे लेके जाते हो तो आप वही मोमेंटम को कम कर, वही मोमेंटम को जीरो बनाने के लिए आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, बिकॉज आपका हाथ पीछे जा रहा है. तो अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा तो फोर्स तो कम एक्सर्ट होगी. तो दैट्स व्हाई हैंड बेसिकली do not get don't get hurt while taking a catch if you take them in basically in the backward direction, right, behind it. ठीक है? Yes, sir. So उसकी वजह से फोर्स जो लगता है वो कम लगता है. आई होप दैट्स क्लियर ऋत्विका. Yes, sir. It's clear. ठीक है, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट इज ऑल द कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट. अगर ऋत्विका सपोज करो एक पर्सन है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कोलिशन हो गया, तो उस वो जो बॉडी है उसकी सडनली एकदम आगे जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट? बिकॉज जैसे अप्लाई करते हो ब्रेक वैसे आगे जाती है ना बॉडी. तो कोई सीट बेल्ट ना होने की वजह से, कोई एक काइंड ऑफ कोई भी सपोर्ट नहीं होने की वजह से डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन होगा डैशबोर्ड से, राइट? बट जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाते हो, सीट बेल्ट लगाने के बाद अगर आप आगे भी जाते हो तो सीट बेल्ट स्ट्रेच होती है. स्ट्रेच मीन्स वो आपकी जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको ज्यादा टाइम तक एक्सटेंड कर देती है, मतलब कि आपका अगर कोलिजन हुआ भी तो सेवियर इंजरीज होने के खतरा कम होता है. ठीक है? Yes, sir. That's why seat belts are important and mandatory while traveling in a car, bus or any vehicle, right? Yes, ठीक sir. है, प्लीज ये क्वेश्चन करो ऋतिका.
They're 24 newtons. Next question, करो please, Rith. $4,500. Answer, Rithvika. And 500. 500. Let's check it out. It's 4,500. Rithvika. So I said 4,500. अच्छा अच्छा ठीक ठीक then ठीक अब ये करो please.
Alright. Hello. meters, and the Yeah. second bit is 20,000. Tell me the first one again. 20 meters in the first 2 Mm, seconds. The first 2 seconds, 20, it's 15. Because in the first 2 seconds, the area covered is a triangle. So half base into height means half into 2 into 15. So 2 will get cancelled with each other and the 15 would be left over. Oh, okay, sir. I took the 15 value as 20. Okay, okay, no issues. Tell me the second one, 20,000 or 2,000? Sir, 20,000. It's minus 15. So one more thing, it's negative minus 15. Okay, so negative 15,000. Oh, okay, So sir. please make sure to use the sign as well. Please do this question. 1 metric ton is equals to 1,000 kg. Oh, okay, sir. Is Rithvika answer? 1,000. Yeah, tell me.
Answer is 14,000 Newton. Rithvika, your voice is lagging. Could you please repeat? Sir, the answer is 14,000 newtons. 14,000 rupees. Correct. Please do this one. Sir, there's something on the screen. You're saying something? Sir, there's like a blank space box on the screen. It's Black fine. box. Is it Is still it? there? No, sir, it's fine now.
Sir, I got 0.005. 0.005. Uh, it's 0.004 ultimately. Okay, so let's skip this here. Let's move on to the next topic. Okay, the next third law of motion is very simple. That every action has an equal and opposite reaction. So there are two main things that you should be remembering. First one is basically the action reaction force on the different bodies, right? So it does not basically act on a single body. So both are on different body, right? Oh, yes, sir. Next thing would be acceleration produced in both the bodies could be different because Rithvika suppose that भाई जो दोनों body एक दूसरे के सामने है that means वो मे बी साइज में डिफरेंट हो सकती है बट अल्टीमेटली फोर्स सेम एक्ट कर रहा है तो भाई मास अगर डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन भी तो डिफरेंट होगा ना ऋत्विका Oh, yes, sir. राइट सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा नहीं एक्सेलरेशन वुड बी डिफरेंट बिकॉज मास इज डिफरेंट राइट दो तीन एग्जांपल्स होता है हाउ डू वी वॉक बेसिकली बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है एक्शन रिएक्शन पेयर आवर ग्राउंड फुट बेसिकली प्रेसेस द ग्राउंड वो एक्शन है और जो ग्राउंड एक्सर्ट करेगा हमारे फुट के ऊपर फोर्स दैट वुड बी रिएक्शन गन रिकॉइल्स सेम एग्जांपल सेम फिनोमेना ठीक है बुलेट जब लीव करती है दैट इज बेसिकली मतलब जब बेसिकली बुलेट फायर करते हैं तो पीछे जो गैसेस बर्न होती हैं वो एक्शन होती है और उसी गैस के प्रेशर की वजह से बुलेट आगे जाती है दैट इज रिएक्शन फोर्स ठीक है Oh, yes, sir. the case of boat and ship when you basically step out from a ship you pushes that boat or ship that means so वो boat फिर आपको push करती है तो you move forward right Oh, yes, sir. ठीक है सो अभी सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स टाइप में सिर्फ यही था ठीक है अब बात करते हैं थर्ड लॉ थर्ड चैप्टर जस्ट अ सेकंड आई थिंक उसमें सिर्फ मास एंड वेट का टॉपिक है ठीक है साउंड चैप्टर तो नहीं है शायद आपका राइट साउंड चैप्टर नहीं है इसमें आपके सिलेबस में राइट No, sir. ठीक है कोई बात नहीं ऋत्विका आज जो है ना ग्रेविटेशनल कंप्लीट कर लेते हैं बाकी वर्क पावर में थोड़े से ज्यादा डिटेल टॉपिक करेंगे बिकॉज वर्क पावर में टॉपिक ज्यादा है वर्क है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो इसमें ज्यादा टॉपिक्स है तो आज की 15 मिनट्स में हम लोग ये कवर कर सकते हैं ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज होती है ऋत्विका हमें पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है राइट Yes, sir. हमारे अर्थ पे अर्थ बेसिकली pushes और attracts the every object on the surface towards itself so वो force होती है वो towards the radius होती है सेंटर की साइड होती है राइट ऋत्विका Oh, yes, sir. ठीक है सो अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स राइट सो अब ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल फिनोमिना के लिए होल्डिंग द एटमॉस्फेयर फॉलिंग ऑफ रेन जो टाइड्स आपको दिखती है ना जो ओशियंस में सीज में टाइड्स होती हैं वो भी ड्यू टू द ग्रेविटेशन होती है बट वो मून की ग्रेविटेशन होती है मून पुश करता है अर्थ को अपनी साइड सो उसकी वजह से हाई टाइड्स देखने को मिलती है राइट Yes, sir. सो अब बात करते हैं every single thing in the universe attracts each other suppose that अभी आप अभी तो आप बैंगलोर में हो शायद से बैंगलोर में हो ना Yes, sir. right if suppose that you are sitting in Bangalore I'm sitting in New Delhi but we are attracted with the gravitational force आप मुझे कुछ force exert कर रहे हो मैं आप पे कुछ force exert कर रहा हूँ ultimately there is some connection through the force so everything in the universe doesn't matter कि वो कितनी दूर है कितनी पास है everything would be attracting each other ठीक है आप मिल्की वे गैलेक्सी पे कुछ force exert कर रहे हो मिल्की वे आप पे कुछ force exert कर रहा है right Yes, sir. ठीक है so gravitational force so the universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every other object with a certain force अब वो अब certain force है तो the force with which two objects attract each other is called the gravitational force भाई एक दूसरे को जो attract करें that is due to the gravitational force clear है Rithvika Yes, sir.
right? So the gravitational force between two bodies is very small if the masses of the bodies are small. अगर small masses है so gravitational force भी small होगी, right? But एक mass बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला बड़ी वाली body है that would exert more force, मतलब basically force same होगा, but क्या होगा ना, मास छोटा है उस बॉडी का तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई इट वुड बी विजिबल ऑन द स्मॉलर बॉडी. जैसे सपोज करो अर्थ एंड मी, राइट? माय मास इज स्मॉलर देन अर्थ. That means Earth is exerting the same force on me, but due to the small mass, that is visible because I cannot float, I cannot fly, because ultimately मुझे Earth attract कर लेगी. But same force में जब Earth की तरफ push करूँ, मतलब exert करूंगा, Earth पे कुछ effect नहीं पड़ेगा, right? Because Earth का mass massive है, बहुत बड़ा है, right? Yes, sir. Any doubt, Rithvika? No, sir. ठीक है. So if one of them is very big, so the force can be easily visible, right? Next is basically Rithvika, every body in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and the square inversely proportional to the square of the distance between them. Simple सी बात है, जितना ज्यादा दूर होंगे फोर्स उतना कम होगा, जितना ज्यादा पास होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा. जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. जी जो होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. इसका मतलब सिंपल सा है, ये कांस्टेंट होता है. आप कहीं भी वर्ल्ड यूनिवर्स में चले जाओ, जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. डजंट मैटर आप जुपिटर पे जा रहे हो, मार्स पे जा रहे हो, यूरेनस पे जा रहे हो, प्लूटो पे जा रहे हो, नेपच्यून पे जा रहे हो, ये सेम रहने वाला है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्लियर है Ritvika? ये जी की वैल्यू साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर दी थी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी ओनली, नॉट द मेज बेसिकली द रीजन बिहाइंड व्हाई एंड व्हाट, राइट? Yes, sir. अब वैल्यू ऑफ जी हमेशा सेम रहती है, तो वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू याद रखना प्लीज, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, या फिर कभी कभी लिखा होता है राउंड ऑफ कर, सॉरी पहले होता है 6.67, या उसको राउंड ऑफ कर देता है 6.7 में. ठीक है, इसका जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी स्क्वायर. क्लियर है? Yes, sir. दैट्स ग्रेट. सो ठीक है, अगर आपकी मासेस दोनों बॉडी के मास दोनों 1 kg होंगे और उनके बेसिकली बीच का डिफरेंस 1 मीटर होगा, तो जो फोर्स निकल के आएगी दैट वुड बी 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. ठीक है, Yes, sir. ग्रेट. ठीक है ऋतिका, ये ट्राई करो प्लीज क्वेश्चन.
Sir, 9.8. Yeah, Rithvika, you said something, yeah? 9.8. 9.8. Correct, correct. Very good, very good. Okay. So that's the value of G, basically the force with which Earth attracts us towards the surface, right? The meter per second. Okay. So when the both the objects are very big, the large masses, so obviously जो force होगा उनके बीच में वो भी large होगा, right? Earth के बीच के sun के बीच का force, right? So these are some examples. So if the gravitational force between the sun and Earth, which keeps the Earth in uniform circular motion, दैट्स वाई हम लोग अर्थ बेसिकली जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट? जो टाइड्स होती हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून, ठीक है? Yes, sir. चलो दैट्स ग्रेट। सो ऋत्विका, आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या था? बेसिकली तीनों लॉज ऑफ मोशन हमने किए, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस किया, और ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया। अब लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, दैट इज मास एंड वेट, ठीक है? सो वो अभी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास नहीं आता उसमें, राइट? अब बाकी हमारा एक टॉपिक चैप्टर बच रहा है, दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट्स सी, कल अगर कुछ टाइम, अगर मेरी क्लासेस राइट मतलब गैप रहता है या फिर समहाउ आई एम अवेलेबल, सो विल डेफिनेटली शेड्यूल अ क्लास सो दैट हमारे 24 से पहले 20 तक हम लोग ये सब निपटा दें, राइट? फिर 2-4 दिन बचेंगे जो आपके डाउट्स होंगे उस वाले सेशंस में कवर कर लेंगे, राइट? Yes, sir. चलो, सो विद दिस ऋत्विका वी